Today our topic of discussion is the coronavirus. Today we will discuss about that what is coronavirus, how it transmits, and what will be their clinical features, and how we can protect from the coronavirus. So first of all, coronavirus is basically COVID-19, also called COVID-19. It mainly infects the respiratory system and causes a respiratory infection. And this is because of the coronavirus SARS-CoV-2. COVID-2. This was first emerged in place of in Wuhan, in China, at the end of 2019. It emerged there, and then it spread to the other areas of the world, and then take the form of a pandemic. The name of the coronavirus is because of there are crown-like spikes on the surface of the virus. This was it is called corona. And the other type of coronaviruses which causes the respiratory diseases like SARS, severe acute respiratory syndrome, and Middle East respiratory syndrome, common cold. These are examples of the coronavirus which causes these type of disorders in the respiratory system. Now this is the structure of the coronavirus. These are the spikes of the coronavirus. This is the single RNA strain of the coronavirus. This is their envelope, and this is the glycoprotein spike which attached to the host cell surface receptors where it replicates. This is the other picture of the coronavirus. You can see there spikes in which the typical features of the coronavirus. Now, what are the routes of transmission of the coronavirus? How the coronavirus transmits? We divide the route of transmission in the 3 steps: person-to-person contact, from the close contact, and by the touching the surface where the coronavirus is present. So the person-to-person transmissions, basically this is the droplet infection. So it can spread when a person coughs or sneezes, and the particles are spread in the form of the vapors and can infect the near person. The second one is from the close contact when you shaking hands or touching the surface which is infected with that virus. So and this way it can infect you. In the third one, where there are the surfaces like on the table or on the doors which is infected, and you touch your hand with it surfaces, and then take your hand to the nose or mouth or eyes, and from this it enters into the body and replicates itself and causes the disease. So these are the ways of transmission of the coronavirus. Now comes to the pathogenesis, that how the virus can infect our organs or system. So this is the example of the virus which infects basically the pulmonary system. It can also infect the other system like GIT, kidney, and other areas. So this is the coronavirus, and this is their DNA, and this is their glycoproteins. These glycoproteins attach to the host cell surface receptors, and the host cell surface receptors are present on the angiotensin converting enzymes, 2 receptors. Those glycoproteins of the coronavirus is attached to the host receptors, and then to the process of the endocytosis, it enters into the cell. And when it enters into the cell, then it releases a single strand of the RNA. This RNA then replicates in the host cell and produces multiple virus particles, viruses, and produces multiple and 100 forms of the infected cells. So these infected cells then transfers into the second stage of the pathogenesis. And the second stage of the pathogenesis, there are the bronchial epithelial cells like type 1 and type 2 alveolar pneumocytes and endothelial cells. So when these cells are infected, then these cells start the process of the inflammation.
So first of all, the type 2 pneumocytes are most commonly infected because they contain multiple of the host receptors in the form of the angiotensin converting enzyme receptors. So when they are infected, then they releases the virus particles which infects the type 2 pneumocytes. When the type 2 pneumocytes are infected, they starts to release the immunity cells like T lymphocytes, monocytes, and neutrophils, and macrophages. So when these inflammatory cells are released or comes into the first line of the defense against the viruses, to neutralize that viruses, it releases different types of the mediators, which collectively called the cytokines. So what are those mediators? Those are the tumor necrosis factor alpha, interleukin 1, and interleukin 6. These are called collectively cytokines. So when they are released and plenty form, they are called cytokine storm. So these cytokines, these inflammatory mediators are released as a result of the inflammatory process, which are the reactionary process to that coronavirus. So when the inflammatory process is not neutralized at this stage, then the pathogenesis process uh, uh, transfers to the late stage of the coronavirus. In the late stage, there will be the reactional response of the inflammation in the form of the complication. So what will occur in the third stage, there will be the alveolar interstitial membrane thickening. The membrane, which is called base membrane, will be thickened. And in the second one, the vascular permeability will be increased because of the vasodilation. And in the third process, the inflammatory cells will comes out to the interstitial space and it will forms an exudate, which is called edema. So this is called interstitial edema. So these are the basically the reactionary process is are the consequences of the inflammatory cascade of the coronavirus. So when this occurs, it not only releases the cytokines, but they also activates other processes of the mediators releases, like the activation of the kinase system, prostaglandin products, and coagulation pathway products, complement products. So all these products have different complications. Like when the coagulation pathway is activated, it will produces the coagulum formation in the form of thrombus. So this thrombus will causes the blockage of the vessels, which supplies to any organ. Like when the thrombus blocks the coronary vessels, it will cause an myocardial infarction. If it blocks the renal vessels, it will cause renal vessel or renal infarction. When it blocks the blood supply to the brain vessels, this will cause stroke. So these are all the complication processes of the inflammation. So from this we can research that basically the coronavirus itself does not cause a disease, but basically the diseases or organ damages because of the reactional response. The organ is damaged because of the reactional response to the coronavirus. This was all about the pathogenesis of the coronavirus. We can again हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं इसका पैथोजेनेसिस. ये हमारे पास कोरोना वायरस है, ये सा आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है और इसकी सरफेस पे जो है हमारे पास ये ग्लाइकोप्रोटीन है. दीज ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली अटैचेस टू द होस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर्स और होस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर्स पे हमारे पास मोस्ट कॉमनली एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर्स होते हैं. तो इन्हीं रिसेप्टर के साथ ये कोरोना वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच हो जाते हैं. जब ये अटैच हो जाते हैं तो द प्रोसेस ऑफ द एंडोसाइटोसिस ये सेल के अंदर आ जाते हैं. जब ये सेल के अंदर आ जाते हैं तो ये अपना सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और जो है इसको ये रिलीज कर देते हैं और फिर ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए सेल के अंदर रेप्लिकेट होता है और मल्टीपल ये वायरस पार्टिकल्स बना देते हैं. और फिर जो है जब ये अपने वायरस मल्टीपल वायरस पार्टिकल बना देते हैं तो ये मल्टीपल एक सेल इन्फेक्ट हो जाता है. तो ये एक सेल जो है 100
नए सेल इन्फेक्टेड नए सेल बना देते हैं। तो ये नए इन्फेक्टेड सेल जो है अगर जो है ये पेयर और पैथोजेनेसिस के नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में जो है ये जो लाइनिंग एपिथेलियल सेल्स हैं पल्मोनरी ट्रैक्ट के, वो मोस्ट कॉमनली टाइप 1 और टाइप 2 अल्वेओलार न्यूमोसाइट्स हैं। इसी तरह के पिलरी वॉल के जो सेल्स हैं वो एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनको ये इन्फेक्ट कर जाते हैं। तो जब ये इन्फेक्ट हो जाते हैं तो मोस्ट कॉमनली ये जो है अल्वेओलर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है होस्ट रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जब इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ये वायरस पार्टिकल्स को रिलीज कर देते हैं, और रिलीज करने के बाद ये टाइप 1 न्यूमोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं। जब ये टाइप 1 न्यूमोसाइट को इन्फेक्ट करेंगे तो ये टाइप 1 न्यूमोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यूनिटी सेल्स को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। ये रिक्रूट करते हैं। जब ये रिक्रूट हो जाते हैं तो ये मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6। तो इसको कलेक्टिवली साइटोकाइंस भी कहते हैं, और जब ये ज्यादा मिकदार में रिलीज हो जाते हैं तो इसको साइटोकाइन बर्स्ट बोलते हैं या साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं इसको। तो जहाँ पे जो है अगर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो फिर जो है ये थर्ड स्टेज में आ जाते हैं। तो थर्ड स्टेज जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन का रिएक्शनरी प्रोसेस होता है, कंसिक्वेंसेस होते हैं इन्फ्लेमेशन के, उसी ऑर्गन में वो कॉम्प्लिकेशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन जो है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के क्या हो सकते हैं कि या तो ये जो सेल्स हैं इन्फ्लेमेटरी सेल जो है वो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सुडेट। तो आपने एडिमा बनाई गई, उस एडिमा को यहाँ हम पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, क्योंकि ये इसने लंग्स को इन्फेक्ट किया है, पल्मोनरी सिस्टम को इन्फेक्ट किया है। तो इस वजह से यहाँ पे इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में अगर फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है, एक्सुडेट की कलेक्शन हो जाती है, उसको हम पल्मोनरी एडिमा बोलेंगे। और जो बेस मेम्ब्रेन है वो उसका ठीक हो जाएगा और वेसल जो है उसकी डायलेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है ये और भी इंफ्लेमेटरी कैस्केड्स के जो मीडिएटर्स कैस्केड की जो बात है हैं, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन करते हैं, इसी तरह के ग्लूटामिक एसिड मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्ट्स हैं, काइनिन सिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, और कोगुलेशन पाथवेज के प्रोडक्ट्स हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसी की फिर अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। लाइक अगर कोगुलेशन पाथवेज एक्टिवेट हो गया होता है तो उसी में जो है कोगुलम बनना शुरू हो जाते हैं वेसल के अंदर, कोगुलम थ्रोम्बस फॉर्म में बनते हैं। तो ये थ्रोम्बस जो है किसी भी वेसल को ये ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक अगर उसने हार्ट वेसल्स को ब्लॉक किया तो ये माइकार्डियल इंफार्क्शन कस करेगा। अगर इसने जो है किडनी की वेसल्स को ब्लॉक किया है तो किडनी में इंफार्क्शन का करेगा, निक्रोसिस का करेगा। इस तरह अगर इसने न्यूरल सिस्टम ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उसको उन्होंने ब्लॉक किया है तो वहाँ पे स्ट्रोक हो सकता है। तो इन सब पैथोजेनेसिस से हम ये डिराइव करते हैं कि ये जो है वायरस जो है सिर्फ जो है वो आर्गन को किसी भी आर्गन को ये डैमेज नहीं करता, बल्कि वायरस के अगेंस्ट जो रिएक्शन प्रोसेस है वो बेसिकली जो है उसी आर्गन को उसी सिस्टम को ये डैमेज करता है। तो ये जो पैथोजेनेसिस प्रोसेस है ये तो हमने डिस्कस किया पल्मोनरी सिस्टम के लिए। तो इसी तरह सिमिलरली इट कैन cause its process of infection and the other system too. If it infects the gastrointestinal tract, so in a similar way, it can infects the gastrointestinal system like in the pulmonary system. And these are all about the pathogenesis of the coronavirus. In this slides, okay, हम discuss करते हैं कि what are the risk factors which what are the risk factors which are more those people who are more prone to the coronavirus. So coronavirus can infect anyone, and anyone can be infected by the coronavirus, but some people who are immunocompetent are on the more risk for the coronavirus, who are previously diseased, like those who are patients of those who are the patients of the chronic kidney disease or chronic obstructive pulmonary disease, those who done some transplant, those who are obese, those persons who have some heart issues, and those who have the cyclical diseases, type 2 diabetes mellitus. These people are on the more risk of the coronavirus. And the second one is the
इसके बाद हमारा आ जाता है कि रिस्क फैक्टर्स के बाद कुछ पीपल जो हैं, कुछ बंदे जो लोग जो हैं वो उसमें जो है हमारे पास कोरोना वायरस अगर हो जाता है तो दोज पीपल इट शोज most serious complications like those people who are asthmatics, we have some blood vessel disease or stroke, brain disorders, and those who have the high blood pressure patients, those who have the liver diseases, smoking, thalassemia, those who are the type 1 diabetes mellitus, these people, the coronavirus shows very serious effects, they are serious effects. So this was all about the risk factors of the coronavirus. Now the clinical features and how the coronavirus presents when it infects the person, the most common features are these. On the top is the fever, second one, the dry cough, shortness of the breath, fatigue, myalgia, body aches, nausea, vomiting, diarrhea, and headache. These are the common features in which the patient of the coronavirus present. In some cases, it goes to the serious condition. Patients can present in the severe acute respiratory syndrome or severe acute respiratory distress syndrome, and in some cases, it can present in the form of pneumonia. These are the severe conditions in which some corona patients present. How we can diagnose the coronaviruses? Coronaviruses are diagnosed from the specimens which are collected in the form of nasopharyngeal or oropharyngeal swabs. The definitive diagnosis is made on the reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR), which is the diagnostic method to which the virus DNA RNA single strain RNA is detected. The other supportive laboratory tests which are done in the patients of the coronavirus like the serum albumin, C-reactive proteins, lactate dehydrogenase. These are the supportive tests which are performed in the diagnosis of the coronavirus. So serum albumin level will be decreased, the C-reactive proteins level will be high, and lactate dehydrogenase level will be high. There will be the lymphopenia, lymphocyte count will be decreased, and erythrocyte sedimentation rate will be increased, and D dimer will be elevated. So these are the supportive tests which are performed. The last slide is the treatment. There is no definite treatment available for the coronavirus, but precautionary methods are used. And the precautionary methods are used are the wearing mask, 6 feet distance from the personal contact, wash hands, multiple wash hands, use of the sanitizer, and vaccine. So these are the precautionary methods by which we can protect from the death virus. This was all about the coronavirus. Thank you.